क्या रखते हैं? नाउ लेट्स टॉक अबाउट केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। शाहरुख खान की टीम जिसने प्री सीजन में बहुत सारी कंट्रोवर्सी कोर्ट करी है एंड बहुत ही ज्यादा ट्रेड के लिए फाइट करी है, बट उनको कोई ढंग का ट्रेड नहीं मिला है। ठीक है, बट हाउ आर देयर सीजन चांसेस, वेदर दे विल विन, वेदर दे विल नॉट विन, वेयर दे विल एंड अप ऑन द टेबल, वी आर गोना टॉक अबाउट नाउ। केकेआर का तो इस बार मुझे लग रहा है कि दे आर हैव लग्ड इन विद द न्यूजीलैंड ओपनिंग प्लेयर पेयर ऑफ टिम साइफर्ड एंड फिन एलन, कि उन्होंने प्री ऑक्शन ले लिया था और उन्होंने अज्यूम करा होगा कि चलो एक को खिला लेंगे। बट उस पेयर ने तो न्यूजीलैंड को फाइनल में बहुत ज्यादा ही, मतलब फाइनल तक पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ था उस पेयर का। सो दे आई हैव थिंक लग्ड इन अनफॉर्चुनेटली, मेरे हिसाब से, कि भाई ठीक है ये तो अच्छा हो गया। ऑब्वियसली द कंट्रोवर्सी ऑफ द बांग्लादेशी इन्फ्लुएंस इज देयर, but yeah, we'll talk about KKR. So KKR, पिछले season, let's discuss the last season. KKR was amongst the teams which I think, I think so they finished third last, मतलब they were eighth last season. And वो last ही finish करते, but I think last में उन्होंने एक दो matches जीत लिए थे, so they were fine. But again, KKR had a bad season for their standards last time. आई थिंक प्रॉपर बैड सीजन था, जैसे तुमने कहा बैड बैड था, क्योंकि उनके और सीएसके के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। दे डेफिनेटली एंडेड टू प्लेसेस अबव सीएसके, बट दे वर प्रोबब्ली फाइटिंग सीएसके ऑल सीजन फॉर बीइंग द वर्स्ट टीम दैट वाज प्लेइंग। प्री सीजन ट्रेड्स में भी आई थिंक दे वर विलिंग टू बाय अ कैप्टन और गेट अ कैप्टन। दे वर कोटिंग सैमसन ऑल्सो, दे वर कोटिंग केएल राहुल ऑल्सो प्रीटी एग्रेसिवली बिकॉज ऑफ क्लोज बॉन्ड बिटवीन अभिषेक नायर एंड केएल राहुल. Not, they couldn't get any of them because they were not willing to give any of their players. They wanted, people were asking for Rinku for trade or Varun for trade, but they didn't want to give them, and that's fine. But then if you're not willing to, part with your good assets, then you don't get a good asset. हमने सीएसके में सैमसन और जडेजा वाली ट्रेड में देखा है. So now what they're left with is, a thin batting lineup with two very good New Zealand openers. They've lucked out in having them, but क्या वो उन दोनों को 11 में खिला पाएंगे, keeping the right balance? We don't know. They've also So they, convinced their Andre balance will Russell. also depend एक on. सेकंड, एक सेकंड, Yeah, एक yeah. सेकंड. Go They've ahead, go ahead. convinced Sorry, sorry. Andre Russell to retire. अरे ठीक है, हम कॉन्वर्सेशन कर, सॉरी, और मत बोलो, काट देंगे वाला. They've also managed to convince Andre Russell to retire, which is like a really big steal. I don't know why players do that. Just go play for another team, get 10 crore ka check. But ठीक है, they managed to convince Russell to sit back and become a power coach. I don't know what that is. So let's talk about their signings. Yeah, so KKR has gone from a West Indies core to now a New Zealand core, जहाँ पे रचिन रविंद्र भी उन्होंने साइन करा है. They can play Rachin Ravindra. He's not a very great T20 player, I would unfortunately have to say, but क्योंकि उनकी स्पिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है भी, so they might not play him. But as you said, they have lucked out with two players, and अब अगर आंद्रे रसल नहीं खेल रहे हैं, and if they are fine with leaving out Rovman Powell, I think they can start off very strong. क्योंकि पिछले साल उनकी बैटिंग में दिक्कत ये थी कि while अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छे से ओपन कर रहे थे, their batting lineup was all over the place. रघुवंशी ऊपर नीचे आ रहा है, कभी रिंकू ऊपर आ रहा है, कभी रमनदीप का समझ नहीं आ रहा है उन्हें किसको कहाँ खिलाना है. राहुल त्रिपाठी का रोल अनक्लियर था. आई थिंक वो लोग Rahul कंप्लीटली Tripathi was not रैंडमाइज with कर them. रहे थे. Rahul Tripathi was राहुल not with त्रिपाठी them सॉरी वाज with नॉट विद देम, बट CSK. दे वर कंप्लीटली रैंडमाइजिंग द स्टार्टिंग ऑफ कैसे हम लोग फर्स्ट में भेजने वाले, कौन कोई कभी भी चले जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता. आई थिंक दैट्स व्हाट दे वर गोइंग फॉर. आई डोंट, I इस बार think आई थिंक दे वुड लाइक अ बिट मोर सॉलिड पोजीशन क्लियरिंग, एज यू हैव, एज शुभांकर बहुत बार बोलता है कि प्लेयर्स को क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. पिछली बार प्लेयर्स को क्लैरिटी नहीं थी वो कि कौन कहाँ खेलेगा. क्लैरिटी साथ आई थिंक उनके टीम प्लान्स भी बहुत अच्छे नहीं थे. My biggest problem with KKR last season was that they had essentially the same player. एक ही रोल के लिए they had three players, which was Rahane, which was Ankush Raghuvanshi, and which was Manish Pandey. You don't need three of those players in T20 anymore. वेंकटेश Which अय्यर is भी पिछले साल उनके साथ ही तो था. हाँ, Venki Iyer was also with them. So that's four players who are essentially playing the same role, right? So you don't need, the modern day T20 teams don't even have one such player. You have four of them, and four में से तीन तो तुम्हारी 11 में at every given point in time थे. So that is poor team construction. They still have three of those players. I don't think Manish Pandey ko they put in the 11 a lot. Ajinkya is obviously their captain, but he had a good season last year. अंकुश रघुवंशी में उनके जो इन्वेस्टमेंट्स थे, they've not paid dividends उतना ज्यादा, and I'm not sure what sort of player Ankush Raghuvanshi is right now. I don't think he's a hitter, but then you don't need a 19-year-old, 20-year-old to be an anchor now. So he needs to go out and hit. Now let's talk about उनके overseas players, because if we are able to nail what four overseas players they should play, then हम बाकी का team easily decide कर लेंगे. Their eight overseas players are Roman Powell, Finn Allen, Tim Seifert, Sunil Narayan, Cameron Green, Rachin Ravindra,
Pathi Rana and Blessing Muzarbani, who's come in for Mustafizur Rahman. So that is Last eight minute, players. good signing actually. Last minute, I think Muzarbani will Decent. be is a very good signing for them because Harshit Rana is also unavailable in the season, Harshit Rana is also so unavailable. Perfect. it might help them. But for me right now, the it might be a blessing in disguise जहाँ पे कि दोनों न्यूजीलैंडर्स को वो बोले अच्छा तुम दोनों ओपन करो एंड विल कंस्ट्रक्ट द टीम अराउंड यू गाइस कि हम लोग मैनेज कर लेंगे. ऑफ कोर्स दे विल प्ले सुनील नारायण क्योंकि आई थिंक ही इज जस्ट पार्ट ऑफ देयर डीएनए राइट नाउ कि हमें उसको खिलाना है. बट आई थिंक सुनील नारायण द बैटिंग हैज कंप्लीटली फॉलन ऑफ नाउ. बॉलिंग भी वो अगर चक करना मतलब अगर वो बॉलिंग में अभी भी उतना अच्छा है दे माइट प्ले. बट आई थिंक वरुण चक्रवर्ती एंड there are other spinning options wherein they can actually couldn't be fine with not playing them. Maybe Ramandeep sits out to play one, matlab ek do और players sit out to play these openers, but they definitely need to play these two New Zealanders in their current form in India, especially Indian conditions. Yeah, I think थोड़ा सा tricky है. I'll tell you why. Because I don't think KKR is the sort of team जो कैमरून ग्रीन पे 25-30 करोड़ खर्च करने के बाद उसको नहीं खिलाएगी. ठीक है. So let's say कि कैमरून ग्रीन is a lock. Sunil Narayan, because of loyalty and because of him being, fucking Sunil Narayan, they will play. So that is two overseas So spots Sunil to lock Narayan in. is not Sunil Narayan right now. He's a Sunil Narayan 4.0, a depleted version. It's a business they are running. Correct? ठीक है, but did they drop him last year in any of the games? No, they didn't even drop Russell, where Russell was having an हाँ. absolute stinker of a season. Exactly. So I don't think, मतलब maybe down the season, maybe 5 games, 6 games down, they might, drop Sunil Narayan because if they don't need him. I don't think, अगर सुनील नारायण ओपन नहीं कर रहा है तो I think just for his bowling you have Varun now. I don't know how it will work. Other if he's in great bowling form, then obviously you can't drop him. But if he's going for like 4 overs 35, 4 overs 40, then you might drop him. ठीक है. But let's assume कि कैमरन ग्रीन और सुनील नारायण को उन्होंने लॉक कर दिया. These are two players that they are gonna play, right? Yeah, of course. Now, if you get Kiwi Bros to open, then you can't play a Pathirana if he's fit, or even a Blessing Muzarbani. I don't think कि उनकी fast bowling इतनी strong है in the absence of Harshit Rana that they can afford to not play at least one of them. So one of Pathirana or Blessing will play. And if one of Blessing or Pathirana is playing, then you only get to play one Kiwi player between Ravindra, Seifert, and Phil Allen. And I think that will be Finn Allen. So while I believe Finn Alien, as people like to call him, will play, आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट कि ये दोनों ओपन करते आए हैं इन्होंने इंडियन कंडीशंस में अच्छा खेला एंड सेलेक्टर्स विल सी कि ऐसा करते हैं. रचिन रविंद्र सो लेट्स बी ऑनेस्ट रचिन रविंद्र अगर वरुण और सुनील रायन दोनों खेले यू डोंट नीड इन योर स्क्वाड. वो भी एंकरिश रोल ही खेलता है. ही इज नॉट समवन हु हिट्स एट 180 No, स्ट्राइक I रेट. think सो आई Sachin थिंk Ravindra is also a terrible T20 player. I would not even buy yes, I him agree. in IPL. I agree. I agree. I agree. So let's say your call is ki Finn Alien plays. For me, Finn Alien and Tim Seifert both play. I think they might actually start with rolling out Sunil Narayan क्योंकि उन्हें realize होगा कि भाई यहाँ कुछ हो नहीं रहा है. We already have enough मतलब रिंकू से स्पिन करा लेंगे या फिर again सुनील नारायण might be important for the bowling right now क्योंकि अब तो उनके पास as you said कि well उनकी bowling थोड़ी weak है. अब हर्षित राणा भी नहीं है. They will so मेरे हिसाब से कैमरून ग्रीन इज समवन हु विल हैव टू सिट आउट. आई नो कि इट्स फाइन कि यार तो भाई अगर वो बड़ा प्राइस टैग दे रहा है वो खिलाएगा. बट दे विल बी वेरी इट विल बी वेरी हार्ड कॉल ऑन द न्यूजी ब्रो एंड ऑन द न्यूजीलैंड ब्रोज कि वो लोग नहीं खेल रहे हैं. बट आई एग्री मेरे हिसाब से आई एग्री कैमरून ग्रीन और साइफर्ट में से एक खेल रहा होगा. टिम एलियन ओपन्स. टिम एलियन ओपन्स. हाँ, so I think उनका top three होगा Finn Allen, जिनके रहाने and Cameron Green. If it's not the top three, I'd be very surprised. The problem is that all three of them are righties, but that's something they'll have to bear with. Yeah, and then Angrik Raghuvanshi, and I think that's where they start ki अच्छा ठीक है Raghuvanshi is our two down. हम इसे stick करेंगे. It's a little weak, I agree, and obviously I don't even know Rahane कैसी form में चल रहा है, but Rahane has a T20 gear which he can switch to, so class is permanent. I think he'll be fine doing that. But then it starts ki whether what sort of middle order are they playing because they will not be able to play Roman Powell in the great form that he is, by the way. मे बी रमनदीप और रिंकू पे बहुत ज्यादा रिलाई करेंगे बिकॉज आई थिंक लास्ट टाइम रमनदीप और रिंकू वर नॉट गेटिंग इनफ बॉल्स टू फेस. रमनदीप तो मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम बैटिंग करने कब आया होगा बहुत बड़े रोल में जहां वो 2 से 3 से ज्यादा बॉलिंग खेला हो. I think they'll have to get Anukul Roy in, they'll have to get Rinku in, Ramandeep in. These will be players 5 to 7, and then 8 पे Sunil Narayan आएगा. And then I think Harshit Rana is a massive loss for them because Harshit Rana will give you
14 के 14 खेलते हैं, एंड वो बैटिंग भी अच्छी करने लग गया था। दैट वाज अ बिग बूस्ट फॉर देम। आई थिंक वो उनके लिए बहुत जरूरी था। दैट इज अ ह्यूज लॉस फॉर देम, एंड आई होप हर्षद राणा रिकवर्स वेल। आई थिंक इट्स बिन ऑन दिस स्पॉट, हमने बोला है, हमें वो बहुत पसंद भी है। इवन दो ही गेट्स अ लॉट ऑफ हिट, ही इज अ वेरी यंग, ही इज अ प्रॉमिसिंग यंगस्टर फॉर इंडिया। हम लोग कितना ही बुमराह पर रिलाई कर सकते हैं, बट या नाउ दैट ही इज आउट, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक पथी राणा इज सॉर्ट ऑफ समवन हु दे कैन प्ले। आई थिंक, आई डोंट नो उमरान मलिक कैसे फॉर्म में चल रहा है, उमरान मलिक को वो खिलाएंगे अभी, ही इज एन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव बॉलर। आई मतलब इन द लेट्स एब्सेंस सी ऑफ हाउ इट वर्क्स ऑब्वियसली आउट। हर्षित राणा दे विल प्रॉब्ली पिक उमरान मलिक। मतलब he'll start at least. उसके बाद if उमरान मलिक experiment does not work out, they might go to आकाशदीप। तो ये लोग ही आई डोंट नो बॉलिंग इफ यू फर्स्ट रिमेम्बर, प्रेफर बट देयर करेंगे। वाज दिस वेरी एक्साइटिंग ब्रेटली लाइक बॉलिंग कार्तिक त्यागी करता था। ओ ही कार्तिक इज त्यागी इज आल्सो, विद केकेआर। या ही इज आल्सो पार्ट ऑफ भाई केकेआर। fuck everything, I will play कार्तिक त्यागी। In my 11 कार्तिक त्यागी will start। तभी मैंने बोला, बिकॉज़ आई रिमेम्बर कि ब्रेटली ब्रेटली जैसा कॉपी कैट एक्शन था उसके लिए, हाँ एवरीवन हाँ। वाज सो No, no, I एक्साइटेड। I remember he defended 8 runs or 7 runs for RR in the last over. This was obviously राजस्थान, 5 6 years back. Unfortunately for him, life's not been kind. He was even dropped from UP ka team in domestics. He's had a spate of injuries and everything. And I genuinely think he has the brains to be a very good bowler, but his body is not cooperating. I hope he's fit. I hope he's doing well, and I hope he plays all the 14 matches. I will play Karthik Tyagi in my 11. I think he'll be batting at 8 or 9. या लेट्स होप सो इट वर्क्स आउट फॉर देम। सो मेरे लिए अभी हमने जैसे 11 डिस्कस करी, नाउ लेट्स डिस्कस की व्हाट डू यू थिंक केकेआर विल डू इन द Well, let's be इन real, दिस yeah. टूर्नामेंट। I don't think KKR will be anywhere close to top four. I think if they finish 5 or 6, they should consider themselves lucky. But that's about it. केकेआर की मेन प्रॉब्लम यही है कि उनका स्ट्रक्चरल बैलेंस इस वक्त हिला हुआ है। अगर दे डू वेरी वेल, इट विल डिपेंड ऑन द न्यूजी ब्रोस, कि भाई हम लोगों ने मचा दी, हम लोग तोड़ के आ जाते हैं और फिर तुम लोग एंड में फिनिश कर देना भाई, रिंकू रमनदीप और मतलब पावल अगर खेल रहे हो और सुनील नारायण मैजिकली Matlab, if स्टार्ट्स टू they're बोल। obviously able to fit in both the Kiwi Bros to open, then so they're set for a good season. क्योंकि Kiwi Bros open करते हैं, and then you have Rinku Ramandeep in the lower order. Maybe you get in uh, what's this guy called? अनुकूल राय। Anukul Roy. Uh, I do see कि बॉलिंग maybe this डिपार्टमेंट इज आई थिंक अ लिटिल थिनर, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती भी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहा, हर्षद राणा भी चले गया, उमरान मलिक लीक्स रन्स, मुस्तफिज मतलब मुस्तफिज रिजवान तो ऑब्वियसली नहीं खेल रहा, सॉरी, मतलब ब्लेसिंग मुजरबानी हैड अ ग्रेट टूर्नामेंट, मे बी ही प्लेज। आई थिंक इट्स द bowling which they can fail. Cameron Green will have to bowl a couple of overs अगर वो खेलता है। I think that's advantage you can get for playing Cameron मतलब the Green. problem is I think they spend too much money on players which are not very good. जैसे if you look at Cameron Green, he's coming off a horror showing for Australia. He might even get dropped from the Australian T20 international team. He's doing that badly. And they've spent almost 30 crores on him, so they can't drop him. Ideally, in an ideal world, their four overseas player, if you're willing to drop Sunil Narayan, could be Finn Allen, Seifert, Robman Powell, and Blessing Muzarbani. This is considering Pathiran is not available. This is a very good I agree. four overseas players, but I don't think that is what they're gonna go with. या इट्स वेरी डिफिकल्ट, मेरे हिसाब से कोई भी आईपीएल टीम दो ओवरसीज ओपनर्स नहीं खिलाती, बिकॉज दैट्स जस्ट नॉट हाउ द बैलेंस विल वर्क आउट, चाहे वो कैसी भी फॉर्म में हो। इट्स अ क्वेश्चन फॉर द कमेंट्स एक्चुअली, कैन यू फाइंड द लास्ट टाइम टू ओवरसीज बैट्समैन ओपनड इन एन आईपीएल टीम? अरे मतलब एंड I can answer that अगेन, question. हाँ, सो इफ अगेन शुभांकर को पता है, मुझे भी पता है, आप लोग हमें बताइएगा। एंड मेरे हिसाब से भी केकेआर डजंट मेक इट। आई थिंक केकेआर स्ट्रक्चरली वीक है, उनका टेम्पलेट इज करंटली नॉट वर्किंग, एंड उनके बॉलर्स भी थोड़े इन फॉर्म उतना नहीं चल रहे हैं। विद द लॉस ऑफ हर्षद राणा एज वेल, आई थिंक दे विल नॉट बी एबल टू डू मच जस्टिस टू द टाइटल्स दैट दे हैव वन बिफोर। वो सो या लेट्स लेट्स जस्टिस की बात मत करना। इस सीजन में सबको जस्टिस मिल जा रहा है। ठीक है, जस्टिस की बात हम देखते हैं कैसे होती है, बट या लेट्स टॉक अबाउट अ न्यू टीम नाउ।